Guwahati's Ulubari dargah in India's Assam state stands as a timeless symbol of unity. For over 2 centuries, people of all faiths have gathered here, embodying India's spirit of communal harmony and shared devotion. The sacred site continues to inspire peace and brotherhood, reminding us of the strength found in togetherness. Take a look. Guwahati in Assam is a major pilgrimage site and cultural hub uniting Hindus, Muslims, Sikhs and Christians in a rich mosaic of diversity. The Ulubari dargah in the city serves as an absolute symbol of brotherhood and harmony. The historic shrine of Pir Hazrat Zahir Aulia Khwaja Jagan draws devout people cutting across different religious backgrounds every day who come to pay their sincere tribute to him. The century-old dargah is a reflection of Sufism known for its message of love, tolerance and inner devotion. यह हमारे ज़ाहिर औलिया बाबा का मज़ार है, मुबारक मज़ार, जिनके यहाँ पर आने से हमारे सभी धर्म के लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और सभी को अल्लाह का हुक्म से यहाँ से ज़ाहिर औलिया बाबा के सदक़े पर सबको का मुराद पूरा मिलता है। Devotees together tie threads for wishes, light candles for hope, and offer flowers in reverence, transcending boundaries, and seek his blessings. It is said that nobody returns empty-handed from the dargah and that all their wishes come true upon coming. यहाँ पे मैं ही नहीं और भी धर्म के लोग आते हैं और सब आते हैं अपने मन्नत पूरा करते हैं। कोई आता है ज़ियारत के लिए आता है, सब अपने लिए अपने कुछ मांगने के लिए आते हैं, सब आते हैं, इसको सुकून मिलता है यहाँ पे आने से और इसलिए आते हैं सब कोई। The dargah is not just a site of religious significance but a cultural landmark. In a rapidly changing world, the Ulubari dargah remains a serene reminder of Sufism's gentle strength, its power to unite diverse communities and its deep roots in the spiritual landscape of Assam.